I think you have left out 2 or 3 important challenges, one being the infrastructure, especially in the rural areas, the bandwidth and power both. And second being the process reform, because they're just automating the old obsolete processes. And third being the inability to computerize all records as RTI Act demands. No, I agree entirely. I'm sorry if I gave an impression that this is an attempt to exhaustively list the challenges or even the opportunities. There are obviously many things that are also challenges. The rural connectivity and infrastructure issues, I do believe that I had very briefly touched on it. This is supported, of course, by the National Broadband Initiative, for example. All the 100,000 service centers would not be effective or functional unless there is a telecom connectivity plan behind it. But obviously, for want of time, I couldn't go into those details. But there is a whole lot happening on the infrastructure as well. The process part, I think I had tried to touch on implicitly rather than explicitly, because service delivery cannot be improved by process change alone. And there are 2 approaches to process change. One is you elevate process change to an end in itself, which will not succeed, in my opinion, because in the government, everyone wants processes to change except their own. They want everybody else's processes to change and not their own. But if you link process change to a delivery of a service and a service level, then there is less argument and debate, because you can't just say, I don't want this change. You have to give an alternative way of achieving the same service level. Yeah. Any more questions from the audience? At the back, right there at the back. One moment, sir. Right there at the back, yeah. Mike. आप बात कीजिए प्लीज। 70% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं और वहाँ की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। गवर्नमेंट की डिफरेंट तरह की पॉलिसीज आ रही हैं, ई गवर्नेंस की भी पॉलिसीज आपकी आ रही हैं, उसकी जानकारी भी गांव को नहीं हो पाती है, गांव के लोगों को नहीं हो पाती है। पंचायत राज सिस्टम को आपने इन्वॉल्व करना चाहा है, लेकिन उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो मैं बहुत ब्रीफ में ये कहना चाहता हूँ, कहने को तो बहुत कुछ है, कि रूरल सेक्टर में जहाँ की 70% लोग रहते हैं, वहां भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, काफी ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश में ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते हैं, तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जैसे मैंने कहा था, यहाँ के ई गवर्नेंस प्लान में रूरल एरियाज में सर्विस डिलीवरी के लिए, कनेक्टिविटी के लिए काफी बजट भी है, और इसमें जो भी एफर्ट्स है रूरल एरियाज में ये सर्विसेज देने के लिए मेहनत और कोशिश हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ई गवर्नेंस से सारे जो प्रशासन में समस्याएं हैं वो सारे हल हो जाएंगे, पर जहां तक सरकारी सेवाएं अर्बन एरियाज या सिटीज में उपलब्ध है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचने का एक कार्यक्रम है, और उससे उनको काफी सुविधा पहुंच सकती है और पहुंच भी रही है जहां तक ये अभी पहुंचा हुआ है। But I think the gentleman has a very good point, because I mean the hemorrhaging of government schemes, centrally sponsored schemes in rural areas is so serious in terms of its effects on the poverty alleviation program, the government, that I think, really focusing on those schemes using information technology, I think is absolutely essential. And I thank you for your question. The Chief Information Commissioner had a question. Not a question. I just वही आपका जो सवाल है उसके बारे में मैं भी ये कहना चाहता था, क्योंकि मैं सचिव रह चुका हूं पंचायती राज का। तो पंचायती राज की मंत्रालय ने एक मुद्दा बनाया हुआ है और इनके साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने आपको बताया, चंद्रशेखर जी ने अभी आपको बताया कि हर 6 गांव के लिए एक सर्विस सेंटर होगा, जहां की ये जो सारी इसको ई गवर्नेंस के अंग हैं वहां स्थापित हो जाएंगे। लेकिन उनके साथ साथ NREGA, जैसे आप जानते हैं, एक योजना बनाई गई है जो गांवों के लिए बनाई गई है, और इसमें उन्होंने दफा 4 की जिसका मैंने जिक्र किया था अभी आपको RTI के बारे में, दफा 4 का जो मुद्दे हैं, जिसमें सारी जो स्कीमें हैं, जितने भी लोग वहां उनको नौकरियां मिल रही हैं, जितने भी तफसीलात हैं, वो सारी चीजें
दफा 4 के तहत वो पब्लिसाइज की जा रही है, न सिर्फ पंचायतों के जरिए परंतु कंप्यूटर्स के जरिए भी। अच्छा, एक मसला तो ये है कि कंप्यूटर्स के जरिए हम अगर दिखलवा रहे हैं, लेकिन वो लोग कैसे देखेंगे जब कंप्यूटर्स ही नहीं है। लेकिन एनआरईजीए में ये स्कीम है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स लगाए जाएं, और इन्होंने जैसे आपको बात बताया है, हर 6 गांव के लिए कंप्यूटर्स होंगे। और मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय में आपने कहा कि अभी नहीं हुआ, अभी हो रहा है, उसमें यह है कि इस साल के अंत तक हर पंचायत को किसी न किसी कंप्यूटर के साथ एक वास्ता रहेगा, ताकि ये जो योजनाएं वगैरह हैं, जो आरटीआई है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसके तहत जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं पंचायत लेवल पे भी वो मिलेगी। और आपका कहना ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वहां नहीं होगा तो फिर हिंदुस्तान में हमें होना या ना होना उसका मतलब ही नहीं रहता है। शुक्रिया। Okay, just one small point if you permit. I'd just like to add, एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अभी जो मोबाइल एक्सप्लोजन का मैंने जिक्र किया है, उसको ध्यान में रखते हुए जहां तक गवर्नमेंट सर्विसेज मोबाइल फोन के द्वारा गवर्नमेंट सेवाएं प्राप्त हो सकते हैं, उसका भी विचार हो रहा है। अभी बिहार में कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो आरटीआई के सर्विसेज भी थ्रू मोबाइल फोन वो पेश किया जा रहा है, और छोटे पेमेंट्स जो है मोबाइल फोन के थ्रू टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी शामिल है। तो इस तरह से मोबाइल फोन का जो पेनिट्रेशन हुआ है, उसका भी हमें फायदा उठाना चाहिए रूरल एरियाज के लिए। धन्यवाद। मिस्टर नारायणन, you had a question? All right. Any other questions? At the back, yes, with the mic. Go ahead. Yeah. Good afternoon, everybody. I am from Bihar. Let me first introduce myself. I am Gopi Kumar Verma, working in SIPS, South Indian Federation of Fishermen Societies, Trivandrum. My question is, when we talk about ICT for informative and education system, and ICT for e-governance, and some kind of business-driven and commercial services. But my question is particular to this e-governance. Let me give one example. When we talk about Gyan-Dut, once upon a time very famous, very popular, and got many awards. Just ask a question, please, if you can. Thank you. Don't give us a long commentary. Just a question. Okay. So when we talk about e-governance at different levels. So I am talking about at district level and at the point of implementing this kind of services. So this Gyan-Dut died because of the not proper implementation of the particular service, particular e-governance program. So what we are going to do, because we can talk all this sitting on top. If you permit, I've understood the sustainability. question. Yeah. Your basic point is what plans do we have to avoid Gyan-Dut type failures? I think the lessons of Gyan-Dut have been well learnt. The lesson basically is that it's not good enough to create a front end and maybe even a front end with connectivity. You need to get the back end ready, and without the back end being ready, you cannot provide any services. That lesson has been well learnt and appreciated, and the effort in the national program is, while creating infrastructure, to also do the back end. There are 27 mission mode projects, all of which are actually focused on getting the back end ready to do precisely that. That is one way. Okay, I think thank you very much. Just one question. No, I'm sorry. That's enough. Thanks very much for your question. I think why don't we turn to Mr. Kaushal now, and from the private sector, who has his own views on e-government and e-readiness. Just briefly, sir. Thank you. Mr. Chandrasekhar has already very eloquently put the